हाय, मैं हूँ जय सोनी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। In the whole series of ये रिश्ता क्या कहलाता है, Abhinav was just not a green flag but a green forest. Though it was not a smooth sail in the beginning, there was a lot of ups and downs. But then I just focused on my thing. I just wanna give audience the way जो अभिनव का लिखा गया है, बस उसको मैं play कर लूँ. Jay will be the perfect choice for Anuj Kapade and Anupama. Please ask if you would like to play Anuj's character if offered. ये गौरव सुनेगा ना अगर तो गौरव बोलेगा. We love Jay and Pranali's chemistry in ये रिश्ता. Any chance of working with her again? So on this note, we have a small segment with you for you. So of course, जब हम आपको interview करने आ रहे थे, we asked the fans if there's any question and बहुत तो नहीं, but जो हमें लगता था हम पूछ सकते हैं, जितना हम आपसे पूछ सकते हैं, we have taken that. Your favorite Gujarati food, like आप शायद गुजराती फूड को यार, आप गुजराती को फेवरेट फूड है, फूड ही हमारा फेवरेट है. हम मुझे फूड फेवरेट फूड, फूड इज फेवरेट एक्चुअली है. तो आई लव घर का खाना सब कुछ. मतलब मुझे अगर एकदम वो वाला बोलोगे तो मुझे अब बहुत टिपिकल हो जाएगा, बट हाँ मुझे ऊंधियू बहुत पसंद है और वो भी घर का बना हुआ. सो माय वाइफ मेक्स अमेजिंग ऊंधियू, सो या आई लव दैट. Right. Okay. The second question is, and this is related to the projects which you've already done. Sasural, Genda Phool और Baap Bahu और Baby. A show you wish as an actor कि इसका next season आना चाहिए. मुझे तो लगता है कि मेरे सारे शो के नेक्स्ट सीजन आने चाहिए. और बट या ससुराल गेंदा फूल इज समथिंग व्हिच ससुराल गेंदा फूल एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दो कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है. बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं एक जय की झलक है. मतलब कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ मी इज देयर इन दैट बोथ द कैरेक्टर. सो आई विश ये रिश्ता तो चल ही रहा है, बट ससुराल गेंदा फूल एंड या अगर ऐसा कुछ हो तो नेक्स्ट. Right. So this is not a question, but I think this is just a lovely comment for you that in the whole series of ये रिश्ता क्या कहलाता है, Abhinav was just not a green flag but a green forest. Okay, what does Jay think about Abhinav character being a whole green forest? Really, ऐसे जब कमेंट्स मैं भी पढ़ता हूँ ना तो मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है. बिकॉज आजकल आप देखोगे रेड फ्लैग्स तो बहुत है, बहुत ज्यादा. सी यू बीइंग अ गर्ल के रेड फ्लैग्स है. तो उसमें अगर कोई मुझे ग्रीन फॉरेस्ट बोल रहा है, सो आई थिंक इट्स बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं, ग्रीन फ्लैग्स होते हैं. सी देखो इनके मुंह पे स्माइल है कि ग्रीन फ्लैग्स होते हैं. सो बिकॉज नाउअडेज यू सी के वो टॉक्सिक वाला चीज बहुत चल रहा है. सो ऐसा नहीं है, मतलब वो दिखने में अच्छी लगती है चीजें, बट व्हेन यू वांट टू बी विद समवन यू नीड अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू एंड हु इज एक्चुअली अ ग्रीन फ्लैग. एंड आई एम हैप्पी कि मैं ऑडियंस को भी बिलीव करवा पा रहा हूँ. एंड ऑल द लव फॉर अभिनव इज अनरियल. आई एम टेलिंग यू, इट्स अनरियल. मैं जहां भी जाता हूँ, considering you were for a very short span of time, but the love which you have received for the character, मतलब इनिशियली तो इतना भी प्लान नहीं था, but then it got stretched to 11 months. I was surprised and I was happy that I'm getting to play the thing which I believe in. कि मैं बिलीव करता हूँ ये सब चीजों में और मैं वैसी चीजें प्ले कर रहा हूँ. right. तो and धीरे धीरे when the love started pouring in, so I was like, oh, okay, that means it's a good thing. I'm doing something good. Right. Though it was not a smooth sail in the beginning, there was a lot of ups and downs. But then I just focused on my thing. I just wanna give audience the way जो अभिनव का लिखा गया है, बस उसको मैं play कर लूँ बराबर. Because क्या होता है, in a marriage, you need a husband. You need your husband to understand you. You want him to be there with you in thick and thin, sick and sin and everything. Yeah. तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि डेली शो में कभी बार मिसिंग हो जाता है. ऑलवेज वो चीजें दिखाने के बनती नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं होता है. तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई एम ब्लेस्ड टू गेट सच रोल्स एंड तो दैट इज समथिंग ऑलवेज. सो या अभिनव विल ऑलवेज बी. राइट. या ओके. Jay will be the perfect choice for Anuj Kapade and Anupama. Please ask if you would like to play Anuj's character if offered. ये गौरव सुनेगा ना अगर तो गौरव बोलेगा. हाँ, बट एक्चुअली हम दोनों का कैरेक्टर वाज काइंड सिमिलर. some traits. कि हाँ मतलब बट अनुपमा थोड़ी मेरे लिए बड़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है. बट हाँ, so yeah. But yeah, that kind of role definitely. Right. Okay.
till date, who has been your favorite female co-star, like you have really enjoyed working with, or maybe a co-star and a female co-star, male and So female? favorite ऐसा कुछ नहीं है मेरा, but Ragini, because that was my first show, so I learned a lot of things from her, the dedication and everything, and also how to behave in this industry, because it's आप बहुत अच्छे भी होते हो तो you know you've been taken for granted also. So yeah, that is there. And बाकी I think not only female co-stars, I learned from all my co-actors some of the other thing. In Sasural Gendaphul, if you see, there are a lot of senior actors, like Sudhir Pandey, Supriya Pilgaonkar, and all that. So I have learned a lot from them. More professionalism, respecting time of others, and giving importance to the work for what we are here for, and not the other all the things which goes on. So all these things, जो कहते हैं ना, for an actor, it's very important. So all that, yeah. Right. Okay. Last few. We love Jay and Pranali's chemistry in Ye Rishta Hai. Any chance of working with her again? If script comes, if producers feel, then yeah, why not? Okay. Will Jay be interested in a Big Boss reality show? No. And any specific reason behind that? I can't take shit. And मैं भले दिखता वैसा हूँ, बहुत sweet हूँ मैं, वैसे भी, but I am very protective about my things, my family, anything or something. और मेरे सामने फिर मैं बचपन का रिकॉर्ड नहीं पता है लोगों को मेरा कि मैं कैसा था. So I don't want that old Jay to come back ever, because my parents have gone through a lot because of the old Jay. So मैं चाहता हूँ कि वो साइड मेरी ना ही बाहर आए, and the kind of format they have वो आ ही जाएगी आपकी. So I want to stay away, and I want to because as an actor then I will die. Yeah. I don't want to do that. I have really worked hard to be here and portray all these things. So I don't want to go there. मैं क्यों जानबूझ के लोगों से पंगे लूं? मैं क्यों देखूं कि कोई क्या कर रहा है, कैसे नहा रहा है? मुझे नहीं देखना वो सब. कि कोई रियल लाइफ में कैसा है, मुझे नहीं उसकी पर्सनालिटी एक्सेप्ट करनी. भाई तू अपने घर में अपने घर वाला सीन है. So I don't want to do all that. Out of all the characters which you have played till date, which character is the closest to your heart? As I said, everybody, Ishan and Abhinav is my. Okay. Last two. It is because I think of Abhinav's popularity. Will you ever enter in Ye Rishta as Abhinav? No, it's no chance right now. I can't enter the show because मेरी चिता तक दिखा दी है अभिनव की उसमें. So and it's a real character. वैसा नहीं है कि उसका हम शक्ल आ गया, वैसा कुछ नहीं है. So I don't think. Right. Okay. Currently, one character in the television industry, male character, which you have seen and you have really loved that character and the actor, the way they have played that character. If not the recent one, maybe whatever you have remembered. यार मैं बहुत like sorry, I don't think any, because मैं बहुत ही like I watch. But do you remember, like, whenever you watch TV, the last character which you saw, you loved, not necessarily daily drama, say, but mytho, historical. I love Sarabhai versus Sarabhai ki all the characters. So those, and I love the way they have performed. So my favorite, अगर आप देखने जाओ तो Schitt's Creek, if you know, on Netflix. Yeah. So मुझे लगता है कि Sarabhai was something like, okay, wow, what a performance, what actors, what characters. So for me, that's a high. Right. Like by default क्या है ना कि अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छी चीजें सीखी हैं, तो मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. So yeah, Sarabhai, all the characters brilliantly performed. So yeah. Right. Lastly, talking about, of course, you're doing this right now, but जैसे कि आप जानते, fans definitely hope करेंगे कि आप वापस daily soap में आए, daily drama में आए. So anything on that line? Is there anything on talking stage, planning stage? Firstly, I want to say sorry to all my fans, because I know I get a lot कि why am I not coming back on screen, and trust me, I am doing all the possible meetings for you guys but मैं सच बताऊं कि things are not materializing the way I wanted, and till the time I can hold on, I will hold on. And because I can't just go every day to sign that thing कि हाँ मैंने आज काम किया. No, मुझे काम, I want to do a work which I come back home with the satisfaction कि मैं कुछ I have done something good and I have learned something today. So because as an actor I want to learn also from my set.
from the character I'm playing. It's not that कि बस करके आ गया यार, अपना Hmm. shoot हो गया, अपना काम हो गया, आज का दिन निकल गया, ऐसा वाला But scene which I नहीं think है most मेरा. of the actors are any which ways doing. Yeah, they're doing any which ways. Unfortunately, yeah, whatever. And that's why when I do a project, no, people like अच्छा जय कोई project कर रहा है तो it मतलब देखते हैं what is he doing, and always I'm touch wood, I'm been getting good for my performance कि हाँ जय you are a good actor. तो अब वो pressure आ जाता है और लोग बोल के you're a good actor, you're a good actor. तो मैंने कहा फिर मैं गंदी चीज कैसे कर लूं, something which I am not convinced कि वो character मैं नहीं कर सकता. So yeah. But then does it after a point it becomes difficult to reject the rules or the work? It does, because financially obviously Yeah, of it gets course. difficult to but that's why I said no, till the time I can hold on I will hold on. Right. मतलब I don't want to do anything for the heck of it. Touch wood, I come from a business background, so मतलब ऐसे कोई issue नहीं है, but yeah I will do if I think I can you know give something to the audience, not कि बस चल ठीक है ये आ रहा है कर लिया, ऐसा नहीं. Yeah. मेरे को लंबी रेस खेलनी है अपने को, ऐसे छोटे में नहीं निपटाना है. Okay.